देखो सिंपल सा चीज है कि हम अगर पैकेज क्रिएट करने गए, ठीक है, तो पैकेज हम लोग इधर क्या कर रहे हैं कि हम लोग खुद पैकेज क्रिएट कर रहा है। तो खुद पैकेज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम जैसे नॉर्मल जो पैकेज हम लोग अभी तक देख चुके हैं, जो पैकेज अवेलेबल है वो पैकेज नहीं, हम एज ए यूजर पैकेज जो है, एज ए यूजर कोई पैकेज को क्रिएट करना चाहते हैं। तो पैकेज को क्रिएट करने का मतलब क्या है, उस पैकेज के अंदर क्लासेस भी रह सकते हैं, इंटरफेस भी रह सकते हैं, ये सब रह सकते हैं एक पैकेज के अंदर। तो हमको एक पैकेज जब डिफाइन करना होगा तो पैकेज के अंदर मुझे क्लास को भी डिफाइन करना है, क्योंकि पैकेज के अंदर आइदर क्लास आइदर इंटरफेस और बोथ कैन कॉम्बाइन शुड बी प्रेजेंट देयर। तो हमको क्या करना है उस पैकेज के अंदर, हम एज ए एग्जांपल जो लिए, ये एग्जांपल में उस पैकेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है सीएससी पैकेज। और सीएससी पैकेज क्या है, सीएससी पैकेज जो है ये मेरा पैकेज नेम है। और इसको क्या है, जब हम लोग लिखेंगे तो फर्स्ट पैकेज कीवर्ड हमको देना है। पैकेज कीवर्ड के बाद हमको क्या है, जो पैकेज का नेम हम चूज करेंगे उस पैकेज का नेम देना है, और लास्ट में एक सेमीकोलन देना है। तो ऐसे क्या है, हम मेरा पैकेज जो है पैकेज क्रिएट हो गया। मगर पैकेज तो नॉर्मली हम सिर्फ एक पैकेज क्रिएट कर दिए तब क्या है, उसका यूजेस कुछ नहीं। तो पैकेज के अंदर क्या है, हम एज ए एग्जांपल क्या किए कि इस पैकेज के अंदर हम मान रहे हैं कि एक क्लास प्रेजेंट होगा, एक ही क्लास जो है, एक क्लास जो है एक क्लास प्रेजेंट होगा। तो उस क्लास क्या है, उस क्लास का नेम हम दिए है C1, कि ये जो C1 क्लास है, ये C1 क्लास मेरा सीएससी पैकेज के अंदर होगा। अब इसको क्या है, इस क्लास जैसे हम तो एक नॉर्मली क्लास बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल भी रहता है और मेथड भी रहते हैं। तो मुझे वेरिएबल और मेथड दोनों को ही लिखना है। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट सब इंस्टेंस वेरिएबल दिए। अब देखो ए बी सी डी सब इंस्टेंस वेरिएबल जो है, इंस्टेंस वेरिएबल को दिए हम, और उसके आगे एक्सेस मॉडिफायर जो है, एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाइड किए। तो हम लोग को जो 4 एक्सेस मॉडिफायर है, तो वो चारों एक्सेस मॉडिफायर को ही हम क्या किए, इसमें यूज किए। अब उसके बाद क्या है, तो ये तो वेरिएबल का पार्ट मुझे मेरा गया। तो वेरिएबल का पार्ट के बाद मुझे क्या करना है, मेथड डिक्लेयर करना है। तो उस मेथड का क्या है, M1 मेथड हम यूज किए। उस M1 मेथड का काम क्या है कि जो जो वेरिएबल हम लिए हैं उस वेरिएबल का एडिशन करना। तो इसीलिए देखो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये क्या है, इसको टोटल तुम्हारा एडिशन करके उसका प्रिंट कर देना, ठीक है। तो ये क्या, हम पैकेज जो है सीएससी पैकेज जो है, सीएससी पैकेज को डिफाइन किया ऐसे कंप्लीट। तो सीएससी पैकेज को क्या है, सीएससी पैकेज को डिफाइन करने के बाद हम क्या है कि दूसरा एक प्रोग्राम लिखना चालू किए। अब दूसरा जो प्रोग्राम हम लिखना चालू किए, उस प्रोग्राम में मेरा क्या हुआ कि उस प्रोग्राम में मेरा जो फंक्शनलिटी है, उस फंक्शनलिटी मेरा एक जो हम डिक्लेयर किए पैकेज, ऑलरेडी हम एज ए यूजर जो एक डिक्लेयर किए पैकेज, उस पैकेज की तरह इसका फंक्शनलिटी है। उस पैकेज की तरह उसमें जो क्लास है, उस क्लास के तरह हम मेरा जो क्लास हम किए उसका फंक्शनलिटी लगभग सेम ही है। तो हम क्यों उसमें लिखने जाएंगे, अगर जो मेथड मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको हम क्यों दोबारा लिखेंगे, इसका तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफाइन किए एक पैकेज को। अब उस पैकेज के अंदर जो मेथड है और हमको जो जो हम अलग सा क्लास हम लिखे हैं, उसके अंदर जो मेथड हम करेंगे वो सेम ही, फंक्शनलिटी दोनों का सेम ही है। तो हम डायरेक्ट बेसिस में क्या करेंगे, उस पैकेज को इंपोर्ट कर देंगे। अब उस पैकेज को इंपोर्ट करने से क्या होगा, उस पैकेज के अंदर जो क्लास है वो मेरा क्लास में इंपोर्टेड हो जाएगा। अब उस क्लास के अंदर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर जो मेथड है, उस मेथड को मेरा एक्सेस करना है। अब उस मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करना है, मुझे जो हम लोग क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वो मेथड को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ, बाकी क्या कोई कोशिश से हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखो हम क्या किए,
फर्स्ट पैकेज को इंपोर्ट किए, इंपोर्ट जो पैकेज हम डिक्लेयर किए, और डॉट स्टार, तो स्टार मतलब कि सीएससी पैकेज जो है इसके अंदर जितना क्लासेस है वो मेरा प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा। अब खैर कि हम लोग इसमें सीएससी पैकेज के अंदर सिर्फ एक ही क्लास को डिफाइन किए, मगर इन नंबर ऑफ क्लासेस को क्या है हम पैकेज के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। मगर ये जो हम एज ए एग्जांपल लिए इसमें क्या किए, सिर्फ एक C1 क्लास को हम लोग सीएससी पैकेज के अंदर डिफाइन किए बस। तो मतलब क्या है, C1 मेरा जो प्रोग्राम है उसमें चला आएगा, उसमें इंपोर्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, अब C1 का अंदर जो मेरा मेथड है उस मेथड का फंक्शनलिटी मेरा चाहिए मेरा प्रोग्राम में। तो उसको अगर चाहेंगे हम, तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, मतलब C1 को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो C1 क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, और जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेथड जो है मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ देखो, हम C1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और उस ये जो C1 है ये C1 नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट 1 होगा। ठीक है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू हम लोग M1 मेथड को कॉल किए। तो ये ऑब्जेक्ट 1 किसका है, C1 का ऑब्जेक्ट है। तो C1 का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 से हम लोग M1 मेथड को कॉल किए, क्योंकि M1 जो है ये C1 क्लास का अंदर है, हम लोग एक्सेस करने चाहते हैं उसको। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू M1 मेथड को कॉल किए। अब इसका आउटपुट क्या होगा, हम तो कोई वैल्यू ही डिक्लेयर नहीं किए थे उधर, तो आउटपुट ऑब्वियसली जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट प्रिंट होगा। अब इंटीजर का डिफॉल्ट क्या है, इंटीजर का डिफॉल्ट है 0। तो इसीलिए क्या है कि जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट 0 शो करेगा, वही शो किया मेरा। ठीक है, क्लियर? अभी क्लियर है? यस सर। ओके, सो then the access modifier in the packages. What are the access modifier that in the packages are? Now private, no modifier, protected and public, we have divided and we are presenting it as a table. We are presenting it as a table. If it is of same class, if it is of same class, then if it is private, yes, package, there will be the private, we can access. No modifier, yes. For protected also it will be yes. For public, yes. If it is in same class, if it is in same class, then for private we can access. For no modifier, if we give means default, then also we can access. For protected also we can access. For public also we can access. Then the next condition is same package but the subclass type. Then if the access modifier is private, we cannot access. That's why it is written no. If there is no modifier mentioned, okay, we can access. If no protected, means if protected is there, access modifier, then also we can access. If it is public access modifier, then it will be always access. It is the basic thing that if public is there, no condition, each and every condition it will satisfy. That's why you see in this table all yes in the case of the public. Then if access modifier of the package, now let's say the third condition is it is same package but non subclass. In that time if the access modifier is private, then we cannot access. If there is no modifier, then we can access. If it is protected, then also we can access.
If it is public, then we can also access. But if different package subclass, the condition is different package subclass, then if it is private, then we cannot access. If it is default, then we cannot access. If it is protected, then we can access. If it is public, then obviously it will be accessed. And there is different package and non-subclass. Then for private access modifier, we cannot access. For no modifier, that means default. In default case also, we cannot access. If it is protected, then also we cannot access. But if it is public, then we can access. So this table you have to keep in mind. So if protected access modifier is basically it is accessible outside the package. So yes, but only if the class is inherited. So that's why it is written that different package but non-subclass. If this condition is there, then the protected access modifier we cannot access. If it is protected access modifier is used, then for the different package and non-subclass, we cannot access. So that's why it is written no. Okay. So this table you have to keep in mind that when in which access modifier the condition can be true or condition can be yes and condition can be no. So these things you have to keep in mind. Okay. So this is basically what? This is basically the package concept. Now, this is what, and like this, we can define the custom package. In our program, we can define the custom package. Okay? Clear? Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now, we will start the next topic. The topic is the adapter class. This is the another topic, the adapter class. So, basically, what is the adapter class concept? Now, already in the Java, we have seen about the event handling. Now, if you remember, what is the problem we have faced in the event handling condition? What the drawbacks? What the drawbacks we face in the event handling condition? Can anyone say that what drawbacks we have faced there? Anyone? When we have seen the event handling condition, that like action listener, mouse motion listener, then key listener, all of this we have seen when the event handling condition, event handling listener, interface, then our mouse motion listener interface, all of that. Which problem there we have faced? Which drawbacks we have faced? We have the main drawback we faced is what? The main drawback we face as the our interface. In that time, if you remember, what the drawbacks is there? That if there is necessary or not in our program, we have to import it, or in that case, not import, it will be interface. We do what? Implements. So implements all the abstract method that is present, whether it is necessary or not in our program. You will see that when I have give the blank definition, that if it is not necessary for that, then also we have to implement that and give the blank definition. If we do not use that or do not have the necessary for
use it, we give the blank definition for that. But it is not a good way of a programming. Basically, it is not a good way of a programming of that. Because if it is not necessary for me, then why I will give the blank definition in it? Why I will give the blank definition? If it is not necessary, then I will not use it. But interface concept state that whatever the methods, abstract methods that are present inside the interface, you have to implement that in your, if implement in your class, that means the child class. In the child class, you have to override the condition, override the method, whether it is necessary or not. So that's why what in that case, if it is not necessary, then also we are implementing that and we are giving the blank definition there. That is the main problem we faced in the event handling condition. But adapter class is what? If this interface, we able to convert this interface into the class, then that problem should not be there. Because in class, such things is not there, that yes, these things you have to keep. That means all the method that is present inside the class should be imported, or should be, if it is necessary or not, then also you have to use that. It is not like that. Class do not have such concept. So that means if we convert that interface to the class, then we will not face such problem. So basically, this is the thing that we are doing. What? We are converting that into the class. So that's why it is said, you see, used to simplify the process of event handling and providing empty implementation of the all methods in an event listener interface. Now, if we define a new class to act as the event listener by extending one of the adapter class and implementing only those methods that you want to use in your code. That means if we convert that interface into the class concept, and inside that class, all the methods that are present in the, let's say, motional interface, mouse motion interface. Inside of this, there are the three methods or the two methods that are present. We will do what? If we give it to the mouse motion adapter class, that means if we convert that interface and all the methods that are present in the interface, we use it in the class, then when we will extend that class, only those methods that are necessary, we will use that. Other method we do not have to use for that. But in the case of the interface, we are using all the method whether it is necessary or not. So this is the basic difference, and for that the adapter class concept came. To overcome such problem, the adapter class concept came to us. Now here, like as an example, you see, we know there is the action listener interface. We have action listener interface. Let's say in the action listener interface, there are n number of methods present. As an example, we are saying that the action listener interface, which is used for the event handling, in that action listener interface, we have n number of methods present. Inside of that interface, n number of methods present. So what we will do, there will be an adapter class present. There will be an adapter class present of the action listener interface. So we are converting, we are using a name class, different class we are using there, and which is the action adapter. The name of that class will be the action adapter. So instead of using action listener, we are using action adapter class. That means if there is an
action listener interface present, we are converting that action listener interface to the action adapter. Now this is what, then this action adapter will contains the blank definition of the end methods. All of the end methods, because action listener interface, there are the n number of method present. We are doing what? We are using another class. That class is the adapter class. So if it is action listener, then it will be the action adapter class. If it is mouse motion listener, it will be mouse motion adapter class. If it is key listener, then it will be the key adapter class. So based on that, the adapter classes are present. And these classes do what? The blank definition that are present, this will be now present inside the adapter class. Now, in this example, we are saying that action listener interface we are using. In that action listener interface, a number of method present. So here we are using action adapter. The class we are using action adapter, and the n number of methods, the n number of methods that are present in the action listener interface, that n number of methods blank definition, the n number of methods blank definition will be present in the action adapter class. Now it will present in the action adapter class. So only extending the adapter class, we can perform the task. There is no need to define all the methods present in the action listener interface. So all the blank definitions of the methods are by default now present in the action adapter class. So that's why sometimes this the thing, it should be sometimes in the exam, it is mainly given that why we use the adapter class. So basically adapter class is used to for overcome these drawbacks of the interface. And this thing, the adapter class is the name. So for any, how many event handling condition, how many interfaces we have seen, that interfaces, each and every interface has an adapter class. That means action listener interface, action adapter class. Mouse motion listener, mouse motion adapter class. Key listener, key adapter class. So each and everything, that there will be the adapter class present, and we use the adapter class for this condition. So let's see with an example that how the adapter classes we will use. We will see it using an example now. So adapter classes is like that. As an example, you see, this is the class name we have given, the class name, and this is what, this is the name which we are using, this name. It is what? It is extending the frame class. So extending the frame class, predefined frame class, we are extending. That means that frame class which we are extending here, this frame class object should be created. So that's why you see we have written frame F, and inside of it, this is the constructor, because this name and this class name are same. So this is what, this is the constructor. And inside of the constructor, you see, we have created the object of the frame class, F equal to new frame. And here in the frame, in the level, what you will write, it is up to you. So I have not written anything, that level. So in the frame like this, a frame will be created, and in that frame, this frame name will be what you have passed as a level. So the frame name will be shown like that. The frame name will be shown like that. Now here, what we are doing, you see,
F is what? F is the object of the frame class. F is what? F is the object of the frame class. Now through this object, we are calling add mouse motion listener. We know add mouse motion listener is what? This is the event handling. This is any event generated by the mouse. It will be handled by the mouse motion listener. And inside of it, there is a method that is add mouse motion listener. So this is what we are doing, that we are currently doing the registration. That means with the frame, we are registering our mouse motion listener. And inside of it, you will see we are passing in that time this keyword. But here you see, instead of passing this keyword, we are passing mainly an object, new M1. Now this is what this M1 is, the class which we are using again, that class object. Instead of using what? Instead of using this keyword means this keyword will use for the current registration. So that means if we use this, then the adapter class object we are passing. But instead of this, you see, we are passing the M1. Now where this M1? M1 is another class. And this M1 another class is doing what? This M1 another class is extending this particular adapter class. So that's why you see class M1 extend mouse motion adapter. So that means this M1 is what? This M1 is the class. This M1 class particularly doing what? The adapter class. We have already said for mouse motion listener, the adapter will be what? Mouse motion adapter. So this mouse motion adapter class, that is what? That is extending by this M1 class, which we have created. And that M1 class object, we are passing as the parameter here. We are passing at the parameter here. And inside of it, you see, inside of it, what we have done, only you see mouse. We know that in the mouse motion listener, we have two methods, mouse moved and mouse dragged. We have two methods, but we only need this mouse moved. That means all the blank definition, this mouse moved and mouse dragged, all the blank definition should be present in the mouse motion adapter class. And you see, we all want to use only mouse moved from there. Mouse dragged we do not want to use. So that's why if it is we are implementing the mouse motion listener, in that case, mouse moved definition will have to be also give, and mouse dragged, it is not necessary, then also it has to give the blank definition. But when we use it in our program, you see what we have done, only use that public void mouse moved, mouse event class, and as a parameter mouse event class object, and inside of it what? The functionality which you want, that functionality mentioned. But I didn't mention public void mouse our dragged, because that is not necessary. So instead of this mouse motion adapter, if we use the mouse motion listener, in that case, I have to give the blank definition. But we are using mouse motion adapter. So adapter class we are using, so there is no necessary to give the blank definition. The blank definition is already present inside this class, mouse motion adapter class. It is already present. So no need to give it here. So this is what the adapter class concept is. And here it will be as parameter, you should have to pass the object. You should have to pass the object of the class that is extending the adapter class. That is extending the adapter class. Okay.
tell me that it is clear or not. बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहीं कोई क्वेश्चंस है एडेप्टर क्लास लेके? एनीवन? सर ब्लैंक डेफिनेशन क्या? हाँ, ब्लैंक डेफिनेशन मतलब देखो, इंटरफेस के टाइम में याद है जब हम इंटरफेस में जब ये इवेंट हैंडलिंग जो कर रहे थे, तो इवेंट हैंडलिंग में क्या कर रहे थे हम? इवेंट हैंडलिंग जो था तब हम लोग के पास सब इंटरफेसेस था, तो उस इंटरफेस को हम क्या कर रहे थे? उस इंटरफेस जो था, उस इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट्स कर रहे थे। तो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर देखे थे, जब याद है क्या नहीं, कि जितना हम लोग जो जितना मेथड्स था, अब उस मेथड को मेरा प्रोग्राम में जरूरी है क्या नहीं, हम लोग कोई देखते नहीं थे। अगर जरूरी है, उसमें मानो कि एक जो मेरा वो जो था उसमें अंदर जो, मानो कि ये एग्जांपल लेके हम तुमको बोलते हैं कि माउस मोशन जो लिसनर है, ये लिसनर, तो हम जब प्रोग्राम रहे थे तब माउस मोशन लिसनर को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या है? दोनों मेथड है, माउस मूव और माउस ड्रैग, ये दोनों था। अब मानो कि तुम्हारा प्रोग्राम में ओनली माउस मूव का जरूरत है, माउस ड्रैग का जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर इंटरफेस होगा तो मेरा जरूरत है क्या नहीं, मुझे वो देखना नहीं है, दोनों का ही हम क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। जिसका जरूरत नहीं है वो भी मेरा प्रोग्राम में रहेगा, मगर उसमें उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये है ब्लैंक डेफिनेशन, इसको ही कहते हैं ब्लैंक डेफिनेशन। कि हम लोग क्या है, उसको एक बॉडी पार्ट देंगे, मगर उस बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको कहते हैं ब्लैंक डेफिनेशन। मानो कि माउस ड्रैग जो है, इसको हम लोग ब्लैंक डेफिनेशन दिए, तो मतलब माउस ड्रैग जो मेथड हम सिर्फ लिखे, मगर उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखे। और माउस मूव जो है ये मेरा जरूरत है, तो हम इसके अंदर क्या किए, इसके अंदर तो जैसे लिखना है, जैसे फंक्शनलिटी मेरा चाहिए वैसे फंक्शनलिटी में हम सब कुछ लिखे। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ कि इंटरफेस में अगर चाहे या नहीं चाहे, मुझे सब मेथड को इंप्लीमेंट करना है, मगर ये तो एक गुड प्रोग्रामिंग नहीं हो सकते ना कि हमको सभी मेथड हम करेंगे। ये कैसे हुआ? ये तो ड्रॉबैक्स है। यही ड्रॉबैक्स जो था, यही ड्रॉबैक्स के लिए क्या हुआ, एडाप्टर क्लास का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि इंटरफेस जो है, इंटरफेस में इंटरफेस का बेसिक ही रूल है कि उसके अंदर जितना मेथड्स होगा उस मेथड्स को चाइल्ड क्लास में ओवरराइट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है, इंटरफेस को तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो मुझे क्या करना है, ऐसे कुछ सोचना है। तो सब लोग सोच के क्या निकाला कि इंटरफेस के बजाय अगर हम लोग कोई क्लास टाइप का यूज करें तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि क्लास में ऐसे कुछ मतलब रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। अगर उसके अंदर जो मेथड्स है, जो मेथड मेरा चाहिए वही मेथड हम एक्सटेंड करेंगे, बाकी को छोड़ दो, बाकी को नहीं चाहिए। अगर नहीं नहीं चाहिए तो मुझे उसमें ओवरराइट करने का जरूरत नहीं है, उस मेथड को ओवरराइट करने का जरूरी नहीं है अगर नहीं चाहिए मेरा। तो इसीलिए क्या किया कि पर्टिकुलरली जो लिसनर है उस लिसनर का ही एक एडाप्टर क्लास बना दिया। जैसे की लिसनर का की एडाप्टर क्लास, एक्शन लिसनर का एक्शन एडाप्टर क्लास, माउस मोशन लिसनर का माउस मोशन एडाप्टर क्लास। तो क्या किए, हर इंटरफेस का एक एक क्लास बना दिए, और उस क्लास में क्या किए, सब मेथड्स जो है
जो उस लिसनर के अंदर या इंटरफेस के अंदर जो जो मेथड्स प्रेजेंट था, सब मेथड्स को क्या किए, उधर उसके अंदर दे दिए, जो क्लास बनाए, और क्लास में क्या किए, ब्लैंक डेफिनेशन दिए, क्लास के अंदर सब ब्लैंक डेफिनेशन दे दिए। तो ये ऐसे क्या हुआ, तो ये सॉल्यूशन मेरा निकल गया कि ऐसे मेरा जरूरी नहीं है। अब उस क्लास को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब मुझे क्या है, सिर्फ जरूरत जो फंक्शन है उसको ही हम लोग उसका फंक्शनलिटी देंगे, बाकी जिसका जरूरी नहीं है नहीं यूज करेंगे। यही चीज है कि एडाप्टर क्लास का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, समझ में आया अजय? यस सर, यस सर। ओके, और बाकी का कोई कुछ? Then I think it is clear to everyone. Okay, then today this much. So in the next class we will start another topic. So today this, up to this, it is covered. So thank you everyone. I am ending the session. So in the next class, that is on the tomorrow, we will start another topic.